अक्षरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्याय नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीमद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम Bhagavad Gita. Oh, Gita. Bhagavad Gita? Jai Gita. So, what I will do, this Bhagavad Gita, to understand, there is a guidebook called Subodhini. So, so we will Subodhini. Subodhini. So with the help of this, and then you read also, it will become very interesting for you. So I'll give you the introduction also about Subodhini so that you get how we have to use it. Keep the book here. In the rainy season, mud paths in villages are often not used. Thus, they get covered with grass. So only when authentic scriptures are not studied for long, pure knowledge becomes covered by speculative and unwanted theories that misdirect the human society. So scriptures present pristine wisdom descending directly from the Supreme Lord, showing us the path of transcending miseries and going back to God. The purpose of any book like Gita, Srimad Bhagavatam is to transcend from this material world and go to the spiritual world, abode of the Lord. When thick grass covers a pathway, it is difficult to walk on that path, or sometimes the path is not even recognized. Similarly, if one generation chooses not to study, understand, apply, and spread the knowledge of the scriptures, the later generations will have no precedence and inspiration to study or follow them, or even become aware of them. Therefore, it becomes the responsibility of sincere spiritual seekers to read and assimilate the scriptural principles and guide the future generations. This Gita Subodhini is a humble attempt to facilitate and simplify the study of our most vital scriptures, Bhagavad Gita, by giving it a structure, flow, and gist in a concise form. That's what you want, right? Right. Bhagavad Gita. अब क्या खिला कैसे? कोई नहीं पूरा पूरा क्या? थोड़ा सा लग रहा है कि Bhagavad Gita is greatly enlightening philosophical song sung by Shri Krishna's Supreme Lord to instruct bewildered Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. The Gita is known for its philosophical depth and practical relevance in day-to-day life. So it is philosophically deep also and is very practical for our day-to-day life. 5 things are discussing that day we discuss. 5 truths of the that embody the teaching of Gita: Ishvara, God, Jiva, divinity, Prakriti, material nature, Kala, time, and karma activities. Bhagavad Gita systematically presents the knowledge of the eternal soul, temporary body, the art of working without reactions, 3 modes that influence all beings, regulated habits, how to speak, how to eat, how to recreate, how to donate, mind control, sense control, meditation, the art of rendering service to Supreme, various powers of God, attachment, detachment, and so on. The Bhagavad Gita is a standard reference manual for all human beings who seek to know the truth, refine their intellect, and uplift their consciousness. The expanse and depth of the Bhagavad Gita is better appreciated from the commentaries of Gita Acharyas or spiritual teachers. In Gita Subodhini, I have made a humble attempt to present the flow of the Bhagavad Gita consciously based on the explanation of Srila Prabhupada, Vishwanath Chakravarti Thakur, and Srila Baldev Dev Bhushan. For a detailed explanation of each verse, one may refer to the commentaries of these Gita Acharyas. Initially, I restrained writing this book as there are already various study guides for Bhagavad Gita presented by many experienced teachers and authors. They're very helpful, and I too personally took help from them for my own understanding of the Gita. Yet several devotees, included many seniors who appreciated my earlier works, Bhagavad Subodhini and Chaitanya Subodhini, requested me to present the Bhagavad Gita in a similar concise format. Therefore, although I hesitated and delayed significantly, I finally submitted to the desires of the devotees, and now offering this Gita Subodhini to the readers of the Gita. Okay. So features of Gita. Both new and second season readers of the Gita can relish the profound knowledge of the Gita as presented in the Gita Subodhini owing to its simplified presentation. The following are the features of the book. Overview chart provides a bird's eye view of the major sections and subsections of a chapter in a block diagram. Section, a group of verses that fall under the same heading. Subsection, a subgroup of verses within a section. Verse synopsis.
A brief summary of a verse highlighting its import as explained by the acharyas. Brief summary of a verse. All the verses are duly numbered and some keywords of the Sanskrit verses are given in brackets. Keywords of Sanskrit are given in brackets. Verse, a most vital Sanskrit verse of the chapter, which is worth memorizing, presented in the flow, sometimes with its line by line meaning in a tabular form. Sometimes a series of verses that present a list of characteristics presented in tabular form with the corresponding Sanskrit and English keywords duly color coded. This is to help the reader get familiar with the important Sanskrit verses. Table, a list of items under a section, flowchart. Give a bird's eye view of sequence of stages in a process. Note, a vital comment or a brief explanation on a verse or section, mainly related to the flow of the chapter for enhancing the understanding. Link, the connection between the two verses, sections, subsections, or chapters. Footnote, deeper insights, additional information, application perspective. The links, notes, and footnotes are based on the commentaries of thematic compilation. Present list of the verses on various prominent themes of the Bhagavad Gita duly categorized. The objective of this section is to make the reader appreciate the cross-sectional prominence of a specific theme revealed in various chapters. Appendix presents extensive list of reference material from the Gita, unlike thematic compilation. Reference material from the Gita. Okay. They are more direct in nature and with a little or no analysis as names of Lord Krishna and Arjuna and analogies of the Gita. Or no analysis, such as names of Lord Krishna. Okay. To keep the reading of Gita Subhadhi relatively simple, the referencing for verses is done in a standard format. The following abbreviations represent their equivalent expanded forms given against them. 1.2 is chapter 1, verse 2. 1.2p, Srila Prabhupada's purport for 1.2. Q1, question number 1. A1, answer to question number 1. With all the above features, the Gita Subhadhi aims to enrich the experience of your Gita study. Okay. So preparing mood for Gita study. As mentioned earlier, scripture study is of vital importance to a spiritual seeker. The study of the Bhagavad Gita is considered foundational for one's spiritual understanding. At the onset, I wish to briefly present a beautiful episode from the divine pastimes of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu on the study of the Bhagavad Gita. I believe that this pastime and Srila Prabhupada's explanation, it reminds us of key requirement for understanding of the Gita, apart from our intellectual efforts. As at Sri Rangakshetra, Brahmana Vaishnava used to recite the Bhagavad Gita, but he could not pronounce the words correctly. So people would criticize and laugh at him. As he read the Gita, his ears stood on end. Tears welled up in his eyes. And as his body trembled and perspired. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Lord Krishna, the speaker of the Bhagavad Gita, saw the Brahmana and became very happy. He asked the Brahmana which portion of the Gita was giving him so much joy. The Brahmana replied, I am an illiterate. I am reading the Gita as per the orders of my Guru. When I read the Gita, I only see Krishna sitting as Arjuna's charioteer. Taking reins in his hands, he appears very beautiful and blackish. Seeing Krishna instructing Arjuna, I am filled with ecstatic. Lord Chaitanya told him, you are an authority in the reading of the Bhagavad Gita. Whatever you know constitutes the real purport of the Gita. The Lord embraced him and revealed to him that he was Lord Krishna himself. The Lord is pleased by devotion and faithful submissiveness to the instruction of Guru, but not by erudite scholarship or sharp intelligence. The real import of Gita or any other Vaishnava scripture is revealed to one who has faith in the Supreme Lord and Guru. It does not depend on external things like pronunciation or scholarship. Scholarship could be a byproduct of one's scriptural study, but intended end product is the development of good character. So what is the quality of that South Indian Brahmana? Of that? The South Indian Brahmana who met Chaitanya Mahaprabhu. So he's a submissive, he's like the kind of guy, he's an illiterate. So he's like seeing Krishna as normal charioteer of Arjuna, controlling the whole chariot. So he's so much in ecstasy, thinking that how Krishna is the Supreme Lord, he simply become charioteer of Arjuna. So what kind of Lord my Lord is? So he is so much simple, and the Lord is Bhakta Vatsala, that he is simply becoming servant of his own devotees. Okay. So this sight of Lord taking the humble menial service of a devotee is melting his heart. So that means he has developed a devotional fervor for the Lord. He is able to see the Lord with that kind of devotion. Oh, Lord is so great and he's so sweet. So when he is able to think like that, that means his study of Gita is perfect. Because the whole purpose of Gita is not some academically they have to get information, but actually to develop our attraction for the Supreme Lord. Attraction and devotion and submission to the Supreme Lord. So he has already developed that. And he had faith in the instruction of Guru. His Guru told him, you read it every day.
So he was reading it, though he was not literate so much. So he's saying, I'm illiterate. I'm reading Gita as per the orders of my Guru. When I read Gita, I see only Krishna sitting at chariot table, taking rings in hand. He appears very beautiful and black, seeing Krishna and I'm fully ecstatic happening. So just by seeing that love of Krishna for his devotee and devotee love for Krishna, his heart is melting. And he is following the instruction of Guru. That is how it is. His scholarship could be a byproduct of scriptural study, but the intended end product is the development of good character. That is the main thing. And ultimately, love for the Supreme Lord Krishna. See? So, study of Gita should lead to two things. One thing is devotion for the Lord, and we should get a character of a Vaishnava, or character of a devotee. So, if after reading Gita also, if you are, having bad habits, like somebody will be smoking, drinking, and he's scholar in Gita also. In West, sometimes there are people like that. They're scholar in Vaishnava philosophy and all that. But they have bad habits also. They have staying with girlfriend, having smoking, drinking. So what kind of that character is done? And devotion, ultimately love for the Supreme Lord Krishna. We think such a pristine goals begins with the baby steps of practicing various elements of sadhana prescribed by our acharyas, of which scriptural study in the association devotee is one of the important reasons. I sincerely hope and pray that this book is of some assistance in the study and revision of the sincere readers of the Gita, translated and commented by the Srila Prabhupada and other acharyas. I seek forgiveness for any unintended discrepancy in this work and would like to be informed of any improvements required. I invite you to dwell on the glorious teaching of the Bhagavad Gita and experience its enlightening effect. Nice, no? Okay. So the structure of Bhagavad Gita, देखो कैसे है. तो देखो गीता में कितने चैप्टर हैं टोटल बताओ? 18 चैप्टर्स. तो इसमें 6 चैप्टर करके डिवीजन है. ओके. तो गीता को कंपेयर किया गया ज्वेल बॉक्स से. इट्स लाइक अ ज्वेल बॉक्स. So Bhagavad Gita, the crown jewel of all knowledge, is like a beautiful golden box containing the most valuable secret treasure. The 18 chapters of Gita are divided into 3 sections, with 6 chapters each. The first section concerning Karma Yoga is the lower covering of the box. Karma Yoga is the lower covering of the box. The last section about Jnana Yoga is the jewel-studded lid of the box. Okay? The middle section on the Bhakti Yoga is the most excellent shining jewel inside the box. Got it? So the first section, Karma Yoga, the bottom, and then upper is the last section of the Jnana Yoga, the lid of the box, and the first is covering, the lower covering of the box. So they are coverings, but the middle section is the shining jewel in the box, more valuable than anything in the 3 words, which brings Lord Sri Krishna under control. Sri Krishna Thakur gives this beautiful comparison. So yoga means to link one's consciousness with the supreme absolute truth. So Prabhupada writes, when the linking process is predominantly in fruitive activity, it is called karma. You know fruitive activities? Fruitive activity means when you do activities for the sake of some material benefit. That means you keep fruit in mind, some material fruit. Okay. Like people do some yajna, dana, tapa for getting some kind of material benefit. हम ये यज्ञ करें क्यों करें? ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए, या कभी हमारे संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर हमारे को थोड़ा कुछ सम्मान आ जाए, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसका बिजनेस का जो अड़चन है वो निकल जाए और बिजनेस अच्छा हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ दान तब लोग करते हैं, लेकिन कुछ भौतिक लाभ के लिए. उसको कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, उसको कहते हैं कर्मकांड. So the linking process is predominantly in fruitive activity. मतलब ज्यादा वो भौतिक लाभ के लिए, लेकिन फिर भी कुछ भगवान से कनेक्शन है. उसको कर्म योगा. तो predominantly empirical मतलब वो ज्यादा स्पेकुलेटिव नॉलेज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो ज्ञान पर जा रहे हैं कि हमको जैसे कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, इस पर एनालिसिस ज्यादा है, लेकिन भगवान की भक्ति का बहुत कम उसमें अंश है. तो जब हम बहुत ज्यादा फिलोसफिकली या स्पेकुलेटिव नॉलेज पे ज्यादा हम मन रहा रहे हैं, और ऐसे रहते हैं बहुत सारे लोग जो क्या शास्त्र को पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन भक्ति का अभाव रहता है. तो उसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं. तो ज्ञान योग जाता है. तो ज्ञान योग में थोड़ा भक्ति का एलिमेंट हो सकता है. Some touch with Krishna is there, but it is more trying to analyze and accumulate knowledge and all. But when it is predominantly in a devotional relationship with the Supreme Lord, it is called Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga, Krishna Yoga is the ultimate perfection of all yogas. The essential message of the Gita is Bhakti or devotional service unto the Supreme Lord Krishna. The first 6 chapters present how to attain Bhakti by one's work or Karma Yoga. The last 6 chapters describe how to attain Bhakti by knowledge or Jnana Yoga. The middle 6 chapters directly present Bhakti. This fascinating structure of the Gita ultimately concludes that seeking shelter of Lord Krishna by Bhakti possesses the essence of human life. Correct? So Karma Yoga. So what is Karma Yoga? First 6 chapters. Karma Yoga means to perform one's prescribed duties and offering them to the Supreme Lord. जो भी आपकी prescribed duties पे आप पढ़ाई कर रहे हो, so then offering the fruits of your study to Krishna. It's called Karma Yoga. Of course, this activities also should be as per the Vedic injunction. ऐसा नहीं कि कोई क्या कि हम कत्ल खाने में काम करेंगे और हम वो भगवान के पसंद के लिए करेंगे. But that is sinful activity.
Right. But prescribed duties as per the varna ashram. Varna ashram means ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, उसके हिसाब से आपको कुछ जो कर्तव्य हैं आपके आश्रम या वर्ण में रहने के कारण, उसका आप कुछ इनकम भी आपका आता होगा, लेकिन उसको इस तरह से करना कि हम भगवान को अर्पण करें उसका, ऑफरिंग देम टू सुप्रीम लॉर्ड. Such work done with detachment from results is specifically called निष्काम कर्म योग. The कर्म yoga can be sakam karma yoga. Sakam matlab you are attached to result. But nishkam matlab when you don't want food for yourself, you offer it to Krishna. So nishkam karma. So in the beginning, when you be attached to the fruit, and though he understands that my work should be for the Krishna, so some understanding of Lord is there, or some understanding of absolute worship may be there, or may not be there. So that's why there are different gradations also. Some people have, some people may not have. But karma yoga becomes more proper when it is more connected to Krishna. Okay. And you are doing activities for the Krishna, and in the beginning you may be attached to fruit, then later you are not attached, also then it becomes sakam to nishkam, it becomes. And then nishkam karma yoga becomes more mature, then you are not attached to the activity also. You are only interested in pleasing the Lord. Like in the beginning, one may be attached to the work and fruit both. Then he is attached to work, but fruit he offers to Krishna. Then eventually he is not attached to work also, not fruit also, he is simply attached to Krishna. Okay. That is bhakti. Right. That is bhakti. So bhakti means you simply attached to Krishna. Now, whatever is required to be done for Krishna, he will do. So he's not saying that, no, I can only do this thing for Krishna. Sometimes, like suppose somebody comes to a temple. He says, Prabhu, I want to cook in kitchen and I want money also. But I will do for Krishna. But I will only work in temple. That is karma yoga. You want to cook, you will get money. You will get money. That's karma yoga. And then you just push off. Okay. So you are doing work, but you're getting attached to fruits also. Okay. But it is connected to Krishna how? Because you're doing in temple. Okay. Karma yoga. This is very simple. And then later he says, Prabhu, I will work in kitchen, but I will not take money. But I will serve in kitchen. That is nishkam karma. That is nishkam karma. Then when Prabhu, you tell me anything I will do. It's not only that I have to work in kitchen. You tell me clean toilets, you tell me distribute books, you tell me, clean the temple hall, or whatever you want to say. You make the garland. I am ready to do anything for Krishna. Right. That is complete pure bhakti yoga. Okay. Understand? So when the consciousness is only to please the Lord, that becomes complete bhakti yoga. So when he says, the judgment of the result is specifically called nishkam karma yoga, which consists of jnana or knowledge developed by such work. So jnana, because he understands that nishkam karma yoga, he understands, he comes to the platform of knowledge because he understands that how the result what I am getting is not by me, it is Krishna who gives. So it is for his pleasure only. Why should I try to enjoy the result? So that he is able to offer the result to Krishna. Why? Because he is in knowledge. He is knowledge that the Supreme Lord is the cause of all these fruits. So why should I try to enjoy this? It is meant for Krishna. That knowledge is there. So that's why Nishkam Karma Yoga consists of jnana or knowledge developed by such work. Seeing the armies of the battlefield of Kurukshetra, Arjuna becomes overwhelmed with compassion for his relatives and gives various reasons why he cannot fight. Correct? Responding to Arjuna's concern, Krishna first gives him the knowledge of the soul, Atma Gyan or Sankhya, or says that doing one's prescribed work gives happiness either in victory or defeat. Sakam karma. ठीक है? तो सबसे पहले कृष्ण क्या बताते हैं अर्जुन को? आप सकाम कर्म के बारे में कि भाई आप अपना prescribed duty करो. That means you do your duty, you get the fruit. You fight for the right cause, you may become victorious. Good. Okay. So prescribed duty gives happiness, either victory or defeat. But you get, you do your duty, and so there is no offering. Detachment is not being taught, right? He just talking about first. Do your prescribed work. That will give you happiness, either in victory or defeat. अगर आप जीतोगे भी, हारोगे भी, दोनों में भी आपका वैसे बोलते हैं कि as a Kshatriya, if you go and fight, if you are victorious, then you will enjoy kingdom. But if you die, because you are doing a duty of fighting, prescribed duty as per the Vedic injunction, so even if you die, you will attain heaven. So in both the cases, you are going to get material happiness. Okay. You are getting right. Yeah. But the motive is what? Material happiness. क्योंकि वो जीतेगा तो उसको किंगडम मिलेगा, हारेगा तो उसको हेवन मिल जाएगा. तो दोनों ही केस में वो भौतिक सुख मिल रहा है उसको. तो वो क्या हो गया? सकाम कर्म. Krishna then recommends doing such work with detachment by which one attains steady knowledge. Doing such work with detachment. अभी क्या उसको detachment सिखाया, no? Krishna then recommends doing such work with detachment by which one attains steady knowledge. So क्या होगा?
अभी भौतिक सुख के लिए मत करो, तुम ये करो और केवल करने के लिए करो, मतलब यू डू इट फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग ए प्रिस्क्राइब्ड, डोंट बी अटैच्ड टू रिजल्ट, है ना। जब इस तरह से कार्य करोगे ना, एक निष्काम भाव से, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। हाँ, जब निष्काम भाव से करोगे आप, तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, हो गया, उससे दैट विल रिजल्ट टू ज्ञान, एंड दैट ज्ञान इज व्हाट, स्टडी नॉलेज, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। मतलब फिर उस स्थिति में आप क्या होगा, आप जो है किसी प्रकार से डगमगाओगे नहीं आप आपके जीवन में, मतलब स्थिर रहोगे। हाँ, स्थिर रहोगे, सुख दुख ज्ञान मान अपमान इन सबसे आप विचलित नहीं होगे, क्योंकि आप ज्ञान के स्तर पे आ जाओगे, आपको समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, और भगवान नियंता है, वो सब आपको ज्ञान आएगा कब, जब आप निष्काम कर्मयोग के स्थिति पर आ जाते हो। कृष्णा then recommends doing such work with detachment, by which one attains study knowledge sthita prajna. This process is called nishkam karma. See, understood? Then Arjuna gets confused about which of the two, renunciation and action, is better. मतलब अभी फिर मेरे को क्या रिनाउंसिएशन करना है कि एक्शन करना है, मतलब मैं क्या छोड़ दूं कार्य करना, कार्य करूं क्या ना करूं फिर, क्योंकि ठीक है मेरे को आप बोल रहे हो कि आप जब निष्काम कर्म योग करोगे तो आप ज्ञान के स्तर पे आओगे, फिर आपको आप आप स्थिर हो जाओगे, मतलब फिर आपको सुख दुख मान अपमान से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये तो एक तरह से लग रहा है कि रिनाउंसिएशन का स्टेट हो गया, जिसमें आप एकदम स्थिर हो और आपको कोई चीज एंटेंगलमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट इज लाइक द प्लेटफॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन। But Krishna is also telling that you work, do your duty of fighting, and don't be, worried about, victory or defeat. In all cases, you'll be happy, and eventually, and also he says, after that he says later that you do it for me. But right now, Arjuna gets confused that, so but what should I do then? Should I give up all the kinds of work and come to the directive platform of jnana, or should I take the path of action? Which is better? So Krishna explains that action based on Nishkam Karma Yoga is preferable to premature renunciation based on ज्ञान योग। तो अभी कैसा है, ज्ञान योगी क्या करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड ओके क्या असत है क्या सत है, टेम्परेरी इटर्नल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन करके दे ट्राई टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज वेयर दे कैन बिकम इक्विपॉइज्ड। So no action that, so they will only remain speculating about what is, they keep thinking about what is sat, what is asat, and try not to get entangled in materialistic life and all that. They will be very careful. So they come, and then that way they will try to attain this platform of knowledge. But Nishkam Karma Yoga is actually, one naturally gets situated in the platform of knowledge, and he develops natural renunciation. Natural renunciation he develops eventually, like that. So Krishna actually recommends Arjuna that instead of prematurely taking the path of renunciation, where one may actually sometimes just put a show of being renounced, but internally he might be mithyachari. He might be, running after some gratification and all that thing. So that's why he's saying that instead of prematurely getting into renunciation, you better follow Nishkam Karma Yoga. Okay. That's what he's saying. It's preferable to premature renunciation is based on, so he's saying, explain that action based on Nishkam Karma Yoga is preferable to premature renunciation based on Jnana Yoga. Even if Arjuna is qualified for renunciation, he should still do Nishkam Karma Yoga to set the right example. अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ज्ञान के स्तर पर हो, आपको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप अनासक्त हो, फिर भी आप संन्यास की जगह आप निष्काम कर्म योग करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का एक सही एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करें। ओके, वरना लोग को एक उदाहरण ही नहीं मिलेगा। समझो कोई डिवोटी है और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कर रहा है, बल्कि लेकिन आसक्त नहीं है बिल्कुल, वो है तो एकदम इंटरनली रिनाउंस्ड, बट स्टिल इफ ही इज वर्किंग, is doing his duties, as per varna and ashrama, then people will have good example to see. Right. Correct, no? Otherwise, people also tend to be irresponsible and they'll not do anything like that. Even the brahmachari and sannyasi also, they have to do their prescribed duties. हम वैसे brahmachari हैं, so we also attend the morning program, we attend the classes, and also these are our duties. So we do that duty, so we are going to action that way. So that is also Nishkam Karma Yoga, because we are doing duties for the sake of pleasing the Lord. Of course, it is not just Nishkam, it is relative yoga only, but it is somewhere like we are also doing action. That's what I'm trying to tell. Like we are also involved with action. It's not like we are simply studying and refraining from any kind of activity. We are doing preaching work, we are printing books, distributing books, so many things we are doing. So all actions. But this is kind of Nishkam Karma Yoga, that will be right. So action based on Nishkam Karma Yoga is preferable to premature renunciation. And if Arjuna is qualified for renunciation, he should still do Nishkam Karma Yoga to set the right example. Krishna also warns about lust, the formidable enemy on the path of yoga. So lust means desire to enjoy. Then Krishna teaches transcendental knowledge about himself, his divine descents,
reciprocation with devotees, creation, and so on. Understanding which many liberated souls did their work with detachment. So once you understand the position of Lord, how he reciprocates the devotees, how he has created this world, all these things will lead to you developing detachment from this material world. The liberated souls did their work with detachment. A karma yogi or a detached worker, although working, does not incur reaction because he's working for Krishna. All kinds of sacrificial work culminate in knowledge, jnana, by which one can renounce action, sannyas. Arjuna again gets confused about Krishna's simultaneous emphasis on the karma yoga and renunciation, sannyas. Krishna again clarifies that they both are not contradictory and are the same, but karma yoga is easier. A Nishkam karma yogi can be a true sannyasi and be free from all the bondage and attain liberation. Then Krishna briefly mentions about Ashtanga yoga and the supremacy of Bhakti yoga. Then Krishna speaks of Dhyan yoga or Ashtanga yoga has two stages: Yoga Rudha, beginning, to Yoga Rudha, advanced. The various practices of Ashtanga yoga are aimed at attaining the perfection of realizing the super soul. So purpose of Ashtanga yoga is also what? To realize super soul. Okay. The purpose of Ashtanga yoga. It's another path. It's not Bhakti yoga. It's another path. In yoga, it is necessary to control the mind with practice and detachment. Karma yoga is a more practical and easier method for Arjuna. So, however, Bhakti yoga is the topmost yogi. So basically, Ashtanga yoga is kind of tedious path. So Karma yoga is more practical and easier method, and Karma yoga leads to actually Bhakti. Okay. You can become complete Bhakti yogi also. So Bhakti and Ashtanga yoga also leads to eventually Bhakti yoga. Yogi नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धायां धृतव्यां योमे समेत तमे mata. That Krishna also says. But it's a very tedious path. But Karma yoga is easier, where you can easily come to perform Bhakti yoga by performing Karma yoga. So Nishkam Karma yoga eventually. Right. Correct, no? Because although Krishna describes Karma yoga, Jnana yoga, and Ashtanga yoga in the first chapter of Gita, the main emphasis of the section is Karma yoga. The Nishkam Karma yoga contains within it Jnana and culminates in Ashtanga yoga. Ashtanga yoga क्या होता है? Ashtanga yoga मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. तो इसमें eight stages होते हैं. अष्ट अंग. तो 8 stages. So यम नियम मतलब क्या है? यम नियम मतलब do's and don'ts. Okay. Then आसन वो अलग अलग है. पद्मासन, फिर सिद्धासन, आसन. So आसन क्यों करते हैं? ताकि उनका मन इंद्रियों को नियंत्रित करें. यम नियम आसन प्राणायाम also to control the mind. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब eating is regulated. Okay. You cannot eat anything, so your ahar is regulated. Same way, even your senses are regulated. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, then dharana dhyana samadhi. Okay. Yama niyam asana pranayam pratyahar dharana means then you have to meditate at 12 seconds. If somebody can have unwavering attention, this is called dharana. 12 into 12 seconds is dhyana, and samadhi means 12 into 12 seconds, 3. Okay. Like that. So when somebody is able to meditate, eventually when it comes to the platform, samadhi means meditating on the Supreme Lord in the heart, Paramatma. So but these yogis are very, very rare, those who come to that stage of advancement. Okay. So many times nowadays what they do, yoga, is simply just doing some pranayam. It is not even yamaniyam also they don't follow. Right. Do's and don'ts they don't follow. They eat meat also. They don't watch movies and all. And then they come for yoga and try to. So that kind of yoga is not the real yoga. So what Ashtanga yoga is actually talking about is where one is controlling the mind and senses. One is following the do's and don'ts. Then he's doing pranayam, asana. Then he's regulating his senses. He's regulating his eating. And then dharana dhyana samadhi eventually he's able to meditate. This is yoga. So now karma yoga reality one में so saying Nashkam karma yoga contains within it jnana and culminates in Nishtanga yoga. So somebody who follows Nishkam karma yoga, he develops knowledge, and by dint of that, if he wants, then he can take Ashtanga yoga process also. No. Because he has developed the knowledge, so he understands that how he's not the body, his soul, and he tries to meditate on the Supreme Lord. So some knowledge is there. That's why he can meditate. Otherwise, if somebody has no knowledge, he cannot meditate on it. Right. Like how even for chanting also, how somebody is able to chant because he's heard something about the potency of the holy name and things like that. Then only he can start. Same way, somebody who has developed some knowledge about soul, body, Lord, Paramatma in my heart. So that with the dint of that knowledge and detachment, then he can actually focus on doing Ashtanga yoga. But Ashtanga yoga also has to culminate in Bhakti yoga only. So why then? So the devotee may not go for Ashtanga yoga that stage. When ultimately comes to platform Bhakti yoga, by
simple process of karma yoga. The karma yoga means offering everything to Krishna or his pleasure. That's Nashkam karma yoga. Correct, no? Then Bhakti Yoga. Middle 6 chapters that categorically describe Bhakti Yoga or direct surrender unto Sri Krishna or the essence of the Gita. So now, direct surrender to Krishna is also possible. Direct surrender to Krishna. Okay. So there is a Bhakti Yoga. Bhakti essentially means to be in Krishna consciousness, Machitta. Lord Krishna says several times in Gita. Submissive hearing is the primary aspect of Bhakti Yoga. So this is the main process. See, Bhakti Yoga. So Karma Yoga का भी goal क्या है? Eventually to come to Bhakti Yoga. Okay. But Bhakti Yoga, if you see, it is very simple. It does not need any prior, paths. Right. You can simply hear about the Lord. Submissive hearing is the primary aspect of Bhakti Yoga that reveals knowledge about Krishna's energy and all pervasiveness. So here in Karma Yoga, you develop some jnana because of doing prescribed duties. You get purified. And then when you get purified, you develop some knowledge. Okay. But here you get purified how? By hearing mainly. Okay. Submissively hearing. Like हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, जपा, Right. hearing. So that way also you're getting purified. And that is very powerful, potent. जैसे कि Parikshit Maharaj, he just heard about the Lord 7 days and night. You know that, no? That's how Bhagavatam came. So Krishna's inferior material energy constitutes the elements such as earth, water, air, and so on. Krishna's superior spiritual energy constitutes the living entities, jivas. The jivas are prone to be conditioned with the three material modes and thus suffer. Surrendering to Krishna in Bhakti Yoga delivers them. See, when the jiva surrenders to Krishna in Bhakti Yoga, the Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Pranam, Achanam, Vandanam, Dasam, Sakhyam, Advanam, then Krishna can deliver them. However, impious people do not perform Krishna Bhakti. Some worship of the demigod, some even consider Krishna to be impersonal, and some perform bhakti with various intentions to come out of distress, being inquisitive, desiring wealth and knowledge. But a pure devotee who does unalloyed bhakti, kevala bhakti, ananya bhakti, just to please the Lord Krishna is the topmost bhakti yogi. A sinless person can do determined bhakti. केवल भक्ति और अन्य भक्ति होता है. Ananya bhakti matlab there is no tinge of karma, there is no tinge of jnana. He is not having any kind of other dependency on other paths, like Ashtanga Yoga path, or Jnana Yoga path, or Karma Yoga path. He is not dependent on that. He is directly surrendering to the Supreme Lord by engaging in direct devotional service. That is Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Sparanam, all this, worshipping the deity, then hearing about the Lord, describing about the Lord, remembering the Lord. So direct devotional service, praying to Him, like that. The pure devotee who does unalloyed bhakti, kevala bhakti or ananya bhakti, just to please the Lord Krishna, the topmost bhakti yoga. A sinless person can do determined bhakti. This is another verse in Gita. Yesham tu antagadam papam jananam punikaram. Te dvanda mohan nirvakta bhajate mam ananya bhakti. That means you can develop firm determination devotional service when you're free from all the sinful activities. But how to get free from sinful activities? That's another question. So by bhakti only, you get free from sinful. So when you start with bhakti, direct bhakti, directly surrender to the Lord, hear, chant and read, then eventually you will get more Dhrida Bhakti because you get purified. So as you become purified, you become more pious, then you get Dhrida Bhakti. So Bhakti is only one, full attention, full aim. That person is actually in Bhakti Yoga. He is not depending upon yoga or karma or anything. Karma Yoga, Jnana Yoga, no. He directly coming to Bhakti Yoga. You understand? This Karma Yoga and all is a gradual process. Gradually you get purified, come from knowledge, then you may get Ashtanga Yoga or you may come to Bhakti. Ashtanga Yoga also eventually may lead to Bhakti. It's like a gradual path. But this is like direct. You come to the platform. So whatever one remembers at the time of death will surely attain that orbit. One who always remembers Krishna while doing his duties and performs another bhakti can remember Krishna at the time of death. He reaches the eternal spiritual abode of Krishna and never takes birth again in the miserable material world. Jnanis and yogi attain liberation by the path of light, and karmis who take the path of darkness come back to this world. But a bhakta attains Krishna's abode. See. So he reaches Jnani Yogis attain liberation by the path of light. And so liberation means also not maybe going back to Godhead, but they may go to Brahma Jyoti, which is kind of impersonal liberation sometimes. So he reaches the eternal spiritual abode of location, never takes birth again, that is devotee. And Jnani Yogis attain liberation by the path of light, and karmis who take path of darkness come back to the world. So yogis may go to sometimes Vaikuntha planet if they have some appreciation for the Lord. But Bhakta attains Krishna's abode directly. The knowledge of pure Bhakti is most confidential.
and is the king of all education. It gives direct experience of absolute truth and causes ultimate joy. There's a verse also in this. Yes. How it start? राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षम धर्मम सुसुखम कर्तुम अविद्यते। तो राज्य विद्या बोला गया, किंग ऑफ नॉलेज, राज्य गुह्यम इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंशियल। So it says, knowledge of pure bhakti is most confidential, the king of all education. It gives direct experience of absolute truth. Because when you perform bhakti yoga, like chanting, hearing Bhagavatam, then क्या होता है? Directly you come in touch with the Lord. The direct experience one gets of the, and you can then, and that causes ultimate joy. इसलिए देखो जो भक्ति में आते हैं, from beginning only they feel some ecstasy. There is some bliss there. But those who follow other paths like karma yoga, jnana yoga, so for them it's a very tedious path. Very gradual and difficult path also, not so easy also, because like little indirect. But bhakti yoga is like directly surrendering to the Lord, and by the Lord's help you get purified. So whole purpose of dharma, jnana, marga also is to purify your heart first. But for them, first is to purify all your heart, and then they may give you some other. But in devotional service, what the purpose is given is that you or he explained, all the acharyas have explained, is actually that you engage in bhakti yoga, and that bhakti yoga itself will purify you, like that. So it gives direct experience of absolute truth and causes ultimate joy. And there is a prerequisite also. Anybody can come to bhakti yoga and you can get purified. Under Krishna's supreme direction, his material energy creates, maintains, and destroys this material world. But that work does not bind Krishna. Different people approach Krishna in different ways. Fools consider him as an ordinary man and and devotees worship him constantly with devotion, and the three kinds of Gyanis worship him by considering themselves God. Worshipping this universal form and worshipping demigods for quick material results. So pure bhakti is actually what means is to worship the Lord, no? And under Krishna's direction, his material energy creates, and that does not bind Krishna. Different people approach Krishna in different ways. Fools consider him as an ordinary man. So here, position of Krishna should be understood properly. So Krishna's supreme direction is material energy works. So Maya Dakshina Prakriti. Under the Krishna direction only material nature is working. And he says, and he only destroys this, his material energy creates, maintains and destroys material energy, but Krishna is the boss. But that work does not bind Krishna. So whatever Krishna does activity in this terms of creation, maintenance, annihilation, or other demigods will become instrument. But ultimately Krishna is not touched by any kind of reaction. Krishna does not get any kind of reactions of his activities. He's completely free from all that. We should not see Krishna as an ordinary person. So that work does not bind Krishna. Different people approach Krishna different. Fools consider him as an ordinary man. That is verse, what is that verse? Avajananti mamuna manusham tanimashunam. They don't know me. Who thinks that I have become the human. So they think that Krishna has taken the form of, Krishna has become a human now. Actually, he is not human, he always Lord, but he is right to doing human-like pastimes. So he is having the human-like form even in spiritual realm also. It's not that in spiritual realm all the souls are not having forms. It's all spark. No. We have spark here, the spiritual soul, and we have this material body. But when we are purified, when we go to the spiritual abode of the Lord, then we are not, then we are, a big, what I was saying? When you go to the spiritual world, what I was saying last point. So Krishna is not bound by his any work. Because when we do any activity in this world, then we get bound. We get reaction of it. But Krishna is completely free from all that reactions. He cannot get bound by any kind of actions as a reaction. Like Krishna kills or Krishna protects. So it doesn't come under pious or impious activities. No. Because Krishna is absolute truth. So any kind of material thing cannot touch Krishna. Krishna is like a sun. The sun, even if it comes in urine and stool, cannot affect sun. Rather, sun will purify that. So Krishna is always transcendental, basically.
but that does not bind Krishna. Different people approach Krishna different ways. Who's considered him as honorary man? That I told you. Avjananti Mam. And devotees worship him constantly with devotion. The three kinds of jnanis worship him by rendering themselves God, by considering themselves as God. Considering themselves God. See, three kinds of jnanis worship him by considering themselves God. Worshipping the universal form, worshipping demigods for quick material results. But the process of direct bhakti to Krishna is more simple and easy. Krishna accepts even leaf, accept even leaf, flower, fruit, or water offered with devotion. Krishna is equal to all, but especially inclined to a devotee and excuses him for accidental mistakes. People of even sinful birth can attain Krishna by bhakti. So perform direct bhakti to Krishna. Correct, no? So Lord Krishna is the object of bhakti. Is the source of everything in the material and spiritual world. No one, including the great sages and demigods, can know him. No? So Krishna is not understandable by any great sages, demigods also. The object of bhakti, is the source of everything in the material world. And Krishna is especially merciful to devotees who are absorbed in lively discussions about him. Arjuna acknowledges Krishna's supreme position, which is also confirmed by great authorities. This is all summary of all chapters, 9 chapters. Right. Arjuna acknowledges Krishna's supreme position, which is also confirmed by great authorities. At Arjuna's request, Krishna describes the most prominent of his infinite opulences, vibhutis, which are just like a spark of splendor. By single fragment of himself, Krishna pervades all and pervades and supports this universe entirely. Entire universe supports. And then 11th chapter, Arjuna desired to see that all pervading form of Krishna. Krishna reveals his unlimited expansive universal form Vishwarupa by giving Arjuna the divine vision to behold it. Witnessing that frightening display, Arjuna describes Krishna's supremacy and his form of the time, Kalarupa, that devours everything. Krishna then shows Arjuna the future outcomes of the war and asks him to be just as an instrument in his mission. Arjuna offers prayers and apologies Krishna for his offenses. At this request, Krishna again shows his original 200% form. Pure bhakti is a prerequisite to see any form of Krishna and attain. So Krishna showed this universal form was not very desirable actually by devotees. Arjuna, but still he wanted to see that so that people in this world, when they come, they should not claim themselves as God. Oh, you're God, then show your Vishnu form. But devotees are attached to Krishna's original form, which is 200 actually. So God made man his own image. It's not like when Krishna comes and he assumes our form. Krishna comes in his own form. We are his imitation. Our bodies are like imitation of Krishna. You're getting originally he has the original form of spiritual existence like that. So a personal devotee always worship Krishna, and this path is easy. This path is easy and simple. Again, an impersonalist meditates on the unmanifest Brahman. So Brahman Jyoti, Paramatma, Brahman Jyoti, Bhagavan, the 3 stages. So impersonalist, they will try to only meditate on impersonal Brahman Jyoti. And his path is troublesome. So somebody is attached to impersonal aspect. मतलब भगवान निराकार है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं. तो जो लोग उस तरह से निराकार भगवान को उपासना करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस रास्ते में आपको कुछ रस ही नहीं मिलता है. तो भगवान के साथ सेवा नहीं है, कुछ रस ही नहीं. आपके और अपने बलबूते पे बस अपने गलत चीजों को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं रह रहे. तो उससे समाधान ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है. Bhakti accommodates people at various levels. So ideally one should fix one's mind and interest on Krishna always, but if that is not possible, one can practice to do by sadhana bhakti. If that is also difficult, one can work for Krishna. At least one can give up results for one's work for some good cause. A devotee possesses several glorious activities and like non-envy, equanimity, mercy, tolerance, and so on. That makes him dear to Lord Krishna. Beautiful, no? Thus, the middle 6 chapters glorify the path of Krishna Bhakti. And in the first 6 chapters, Krishna explains the identity, Swarupa, and of the divinity. And in the middle 6 chapters, he speaks of his own identity and the means to realize him. And this is Gyan Yoga. Should we take a break? 2-3 minutes. आपको कुछ पानी नहीं पीना? नहीं. प्रसाद नहीं. थोड़ा सा ले. जाते लूँगा. थोड़ा सा ले. जाते. Let us take 2-minute break. You are able to understand? हाँ. इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर पढ़ने में आपको आसान. फिर आप इसमें रीडिंग सेक्शन दे दूंगा, अगली बार उत्तर पढ़ करके फिर देन we will also read together. We will read something and something we can cover also. So overall then you can understand.
वो क्या हो गया लेकिन अभी तक तो जो मैं बताओ एक बात कहो हम्म, कि जो अगर कोई इंसान है हम्म, वो कर्म योग छोड़ के डायरेक्ट भक्ति योग में आ गया तो कोई बात नहीं, कोई कोई बात प्रॉब्लम नहीं नहीं, होती। क्योंकि भक्ति प्रोटेक्ट करता है उसको। पर वो तो ठीक है बट लेकिन फेथ के साथ आना चाहिए, हाँ। उसको फेथ होना चाहिए। भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन क्या, फेथ। तो अगर कोई को श्रद्धा है ना, तो किसी को साधु में श्रद्धा आ गई है ना, या किसी को प्रोसेस में श्रद्धा आ गई, नाम में श्रद्धा आ गई, और भक्ति में जम कर जाता है, तो उसको भक्ति प्रोटेक्ट करेगी। बट एंड में आना भक्ति की साइड में। हाँ, कुछ एंड में भी आना करके बाद में भक्ति आना है। आओगे तुम बीच में मतलब कर्म से आओ चाहे ज्ञान से कहा किसी आओगे से भी भक्ति आओ, में। आना भक्ति होगा में, तो इसलिए रिकमेंडेशन, इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद कर्म योग में भी कह रहे हैं भक्ति लो, हम्म तुम ज्यादा भक्ति लो। और भक्ति कर, जब हम भक्ति को मेन लेते हैं ना ब्रो, तो हमारी जो एक्टिविटीज भी हैं फिर वो कर्म योग की तरह नहीं होते, वो भक्ति हो जाते हैं। हम्म क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना केवल भगवान को पसंद के लिए, पढ़ाई तो मतलब वो है जरिया है। बाकी आपको पढ़ाई से या जॉब से पैसे से कुछ लेना देना नहीं, आपको लेना देना है कृष्ण से। तो ठीक है, आपका परिवार भी है, परिवार को मैं देखते हो कि ठीक है कृष्ण का परिवार है, चलो उसको मेंटेनेंस करना थोड़ा, राइट लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो किसमें, श्रवणम कीर्तन, राइट राइट भगवान के बारे में सुनना, नाम जप करना, उसमें ही हम्म आपका पूरा फेथ है। तो देन दैट एक्टिविटी आल्सो इज नॉट कर्मी होगा, देन इट इज भक्ति ओनली। हम्म इसलिए प्रभुपाद के पर्पल में देखोगे, प्रभुपाद कई बार कर्म योगा, ज्ञान योग, कर्म योगा, ज्ञान योगा, सांख्य योगा, भक्ति योगा, सबको एक एक तरफ कर देते, एक तरीके से कर देते, सब एक हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी वो ग्रेजुअल वाला बात नहीं कर रहे, कह रहे आप भक्ति लो डायरेक्ट, जपा करो आप डायरेक्ट, प्रभुपाद अपने गीता भागवत को पढ़ो डायरेक्ट, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करो डायरेक्ट, तो भक्ति योगा को बोल रहे हैं प्रभुपाद कंक्लूजन में। राइट राइट राइट। तो भगवान का जो कंक्लूजन है प्रभुपाद पहले पेज से दे रहे हैं। बट उन्होंने तीन वेज आएंगे, या तो कर्म योग है तो भक्ति योग हाँ में आओ, करेक्ट, या भक्ति योग में ही आओ डायरेक्ट, यस, या फिर ज्ञान ज्ञान योग से योग आओ। करेक्ट, आनंद को भक्ति योग में आना भक्ति होगा, तो क्यों फिर हम इतना, इतना क्यों करें, डायरेक्ट भक्ति योग हाँ में मेरा आओ। भक्ति मत क्यों ना, दैट इज द पॉइंट, वेरी बट गुड। वो इस दुनिया में मुश्किल है, वो मटेरियल वर्ल्ड में मुश्किल है वो क्या क्या डायरेक्ट भक्ति योग में आना नहीं, किसी के लिए, किसी आसान के है, लिए। नहीं नहीं आसान है। देखो ना, तभी तो प्रभुपाद जी आए नहीं थे, तो हिप्पी लोग थे, तो उनको डायरेक्ट क्या दिया, भक्ति योग दिया, उनको भक्ति योग दिया डायरेक्ट। बट अगर आप अभी देखो तो दुनिया कलयुग बहुत में भक्ति योग करना ज्यादा आसान आसान है। है, हाँ ज्यादा आसान है, क्योंकि कलयुग वासियों के लिए अष्टांग योग करना कठिन है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, कैपेसिटी उतना नहीं है। कर्मयोग में भी कितना समस्या है, देखो उनके जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है उसमें कितने सारे पाप कर्म हुए नहीं होते हैं। बट भक्ति योग में पूरा भक्ति योग नहीं, जैसे कर्म करते हुए भक्ति योग में आना, समझ रहे हो। जैसे कर्म करते हुए आप नाम जप कर रहे हो तो हाँ, आप साइड बाई साइड भक्ति नहीं तो जब। उसमें कैसा है, उसमें भी वही है ना कि अगर आपका नाम में श्रद्धा है, आप नाम को एक आश्रय लेके कर रहे हो, और फिर आपका जो भी कार्य, वही मैं कह रहा हूँ, तो आपका बाकी कार्य भी भक्ति योगा ही हो गया, वो कर्म योगा नहीं है। अगर आपकी एक साधु में श्रद्धा है, शुद्ध भक्ति में श्रद्धा आ गई, और आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप में श्रद्धा है, उसको आप मेन प्रोग्राम रख रहे हो, फिर आप परिवार भी चला रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो भक्ति योग का ही पार्ट हाँ है, वही मैं बोल रहा हूँ, फिर वो कर्म योग नहीं हाँ है, हाँ हाँ। अच्छा फिर वो भक्ति योग हो फिर गया, भक्ति हो गया वो वही मैं पूछ रहा हूँ। वो मेरे भक्ति को हो दो गया। चीज साथ में नहीं चल चुकी, चलेगी नहीं तो नहीं एक ही नहीं नहीं नहीं, वो भक्ति हो गया फिर, भक्ति योग हो क्योंकि गया। चेतना आपकी क्या है, चेतना ये नहीं है कि मैं क्या, मैं अपना कार्य करूंगा, फिर इसको अर्पण करूंगा भगवान को, फिर नो, तो आप धीरे धीरे ऐसे करके फिर जप कर, ऐसा नहीं, आप जब पहले से चालू कर रहे हो, और आपका श्रद्धा जप में है, आपका श्रद्धा सेवा में, और ये सब चीजें आप भगवान के सहायक, मतलब भगवान का ही समझ करके कर रहे हो, आपका जॉब, आपका घर गृहस्थी हुआ, आप भगवान का ही समझ के कर रहे हो, तो फिर वो क्या हो गया, भक्ति योगी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक जैसे भक्तिनाथ ठाकुर हमारे आचार्य हैं, उनका परिवार भी था, उनके जॉब भी था, लेकिन वो कुछ ऐसा तो नहीं कि वो कर्म योग कर रहे थे, वो भक्ति योगी कर रहे थे, है। क्योंकि वो जॉब भी कर रहे हो किसी भगवान की पसंद के लिए, डायरेक्ट कर रहे हाँ हैं, वही मैं बोल डायरेक्टली भगवान की पसंद के लिए कर वही रहे वही वही मैं कह रहा था। हैं। तो यहाँ अर्जुन भी जब फाइट किए ना, कौन सा योग कर रहे हैं बताओ, अर्जुन मैंने फाइट की, कर्म योग करना नहीं भक्ति योग, क्यों। क्योंकि अर्जुन का चेतना था कि मैं भगवान के पसंद करने के लिए करूंगा बस। अगर अर्जुन को बोलते भगवान ना कि तुम चढ़ाई कर छोड़ो, तुम जंगल में जाके तुम वो करो, बट वो कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग कर रहे थे वही ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कर्म योग कब कहलाता है, जब आपकी चेतना उस भक्ति में पूरी तरह से फिक्स नहीं होती है। भक्ति का है हाँ आपको हाँ कुछ हाँ टच, लेकिन आपका मेन चेतना है कार्य करने में, हाँ हाँ। आपको उससे आ सकती है, और आप अपने फल को अर्पण कर रहे हो, है ना? या तो आप भौतिक सुख को ढूंढ रहे हो, तो कर्म योग सकाम करने हो गया, ठीक है ठीक तो है उसमें आप फल को दे रहे हो भगवान को था, लेकिन आपका फिर भी जो मति है पूरी तरह से अभी भक्ति में नहीं आई है, ठीक है ठीक है तो धीरे धीरे उससे आप डेवलप हो रहे हो, ठीक है ठीक फिर ग्रेजुअली आप आओगे भक्ति है। में। जब आप कर्म के साथ भक्ति योग में लग जाते हो तो वो निष्काम कर्म योग हो गया ना एक तरह से, ये भी कह सकते हाँ हैं, हाँ करेक्ट, तो है ना। अगर आप कार्य कर रहे हो लेकिन आप भगवान, वो अपना फल भगवान को दे रहे हो, तो वो निष्काम उसके कर्म आप, योग तो हो वो गया। निष्काम कर्म हो गया। निष्काम कर्म योग जो है वो भक्ति योग के काफी नजदीक है। नजदीक वही वही। भक्ति योग में क्या होता है, आप कार्य से भी आसक्त नहीं है। और वो कर्म योग और भक्ति योग जब साथ में चलते हैं तो वो निष्काम कर्म योग अपने आप हो जाता है ना।
ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअली जब आप भक्ति योग में पूरी तरह आ जाते हो ना, आपके लिए कर्म योग और ज्ञान योग बचता ही नहीं, बचता ही नहीं। क्योंकि आपका जो भी कार्य आप कर रहे हो ना वो भक्ति है। भक्ति, जो भी आप कार्य कर रहे हो क्या है वो भक्ति भक्ति हो गई वो। ठीक है, ठीक जैसे कोई आकर के इम्प्लाई यहाँ पे कार्य करेंगे, है। वो कुकिंग कर रहा है या फिर क्लीनिंग कर रहा वो है, भक्ति इम्प्लाई योग तो नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो कर्म योग हो सकता है उसका, क्योंकि वो तो इम्प्लाई है ना। बट डिवोशन वो से डिवोटी करेगा वो तो, डिवोटी नहीं है ना। अगर वो डिवोटी होगा तो वो भक्ति योग हाँ में अगर वो होगा। डिवोटी है, अगर वो सैलरी नहीं ले रहा है, वो केवल भगवान की पसंद के लिए कर रहा है, तो तो देखो कोई इम्प्लाई आकर के वहां पे कार्य कर रहा है, या मैं ठीक है मैं कृष्ण टेम्पल वहां पे कर रहा हूँ साफ साफ सफाई, नहीं पैसा चाहिए, वो भी भक्त नहीं बना है अच्छे तरीके, ठीक है, वो भी प्रगति कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो क्योंकि काम कर्म योग हाँ है। लेकिन एटलीस्ट वो मंदिर में आके कर रहा है, तो क्या हो गया वो, और कोई उसको एटलीस्ट पता है कि मैं मंदिर में करना चाहता हूँ, मंदिर में करूंगा मैं, हाँ हाँ, क्योंकि बाहर करने के मंदिर में करता हूँ और मेरे को पैसा दो, ठीक है, ठीक तो फिर वो कर्मयोग के स्तर पर आ गया। है। लेकिन कोई डिवोटी है तो डिवोटी भी कर रहा है, तो वे कार्य तो एक जैसा है, लेकिन वो भक्ति योग कर रहा है और दूसरा कर्मयोग कर रहा है, हम्म। तो ये चेतना का फर्क होता है, बस ये समझो, मेन चीज है जो फल कॉन्सेप्ट। की इच्छा कर रहा है वो कर्म योग कर रहा है, जो फल की इच्छा नहीं कर रहा वो भक्ति योग कर रहा है, ये भी नहीं, कह सकते हैं। जो फल की इच्छा नहीं कर रहा है वो भी हो सकता है कर्म, निष्काम कर्मयोग में वो भी। हाँ, हाँ, बट वो भक्ति में नहीं है। अभी हो सकता नहीं, भक्ति का टच है लेकिन भी पूर्ण रूप से भक्ति योग में नहीं आया वो। हाँ, पूरे अच्छे से नहीं। निष्काम कर्मयोग भी भक्ति ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भक्ति वही में ना, आ गया हाँ, वो, लेकिन फिर भी भक्ति योग जो है वो डायरेक्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, वही। उसमें ना तो कार्य से आ सकते हैं ना तो फल से आ सकते ठीक। हैं, वो भक्ति, वो भगवान को पसंद करना उसका मेन उद्देश्य है, उस दृष्टिकोण से वो कार्य कर रहा है, तो इसलिए हाँ कर्म योग भक्ति योग बन जाता है पूरी तरीके से, जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो, भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, तो कर्मयोग कहलाता ही नहीं है। और अगर आप बिना भाव से नाम जप कर रहे हो तो? हाँ बिना भाव से नाम जप कर रहे हो तो वो भी हो सकता है कि आप देखो उसमें भी ऐसे होते हैं कुछ लोग, जैसे कुछ कर्मकांडी होते हैं, वो भी शायद भगवान का नाम जप वगैरह कर लें बीच बीच में, है ना, कृष्णा नाम का जप कर लें, बाद तो वो, लेकिन उनका मेंटेलिटी अभी भक्ति में नहीं आया, श्रद्धा नहीं आई है, तो फिर वो लोग भी एक तरीके से पूर्ण रूप से भक्ति योग में नहीं बट है। वैसे अगर वो नाम जप कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है भक्ति योग में, कुछ अगर नहीं वो कर किसी सकते। गुरु के अंतर्गत में कर रहे हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करके कर रहे हैं और उनको एक सही कंसेप्शन मिल रहा है, तब वो भक्ति योग में आ रहे हाँ, हैं, वरना ऐसे भी होते हैं जो एक हमारा निराकारवादी भी होते हैं, वो भी नाम जप करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है कि हम कैसे ब्रह्म में लीन हैं, तो वो भक्ति योग में नहीं है। ठीक है। तो नाम जप करने के लिए भी हमको एक वैष्णव साधु से वो नाम लेना चाहिए, जो हमारे को भक्ति का बीज दें, मतलब जो हमें भक्ति के हिसाब से भगवान के प्रति कैसे हमारा आदर्श और के प्रति भाव रख करके तब हम जप करें, वो हमारे को जो मिलता है ना एक प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक भक्त से, तो फिर वो नाम जप जो है भक्ति योग में हम कर रहे हैं। वरना कोई अगर ऐसे ही कर रहा है नाम जप, लेकिन उसका कर्मकांडी जैसे या नो भौतिक भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, उसको पता ही नहीं है भगवान का, तो फिर वो कहीं कहीं ना कहीं भक्ति योग में नहीं है फिर वो अच्छे से। बट अगर वो नाम जप करते तो उसकी ऑटोमेटिकली जो चीज अपना छूटने लगती है, ये हाँ भी वो तो है ना। लेकिन फिर भी नाम जप में शक्ति कब ज्यादा आती है, जब आप किसी प्रामाणिक संप्रदाय से लेते हो उसको। नाम में तो है शक्ति, ऑलरेडी नाम में शक्ति है जैसे, लेकिन अगर आप उसमें अपराध करते हो, जैसे कोई सोच रहा है कि नाम जप करूंगा मैं और उसके बाद भगवान बन जाऊंगा, तो अपराध है ये, है ना, तो अपराध युक्त हो रहा है इसमें, ये बहुत ज्यादा अपराध है इसमें, तो इसमें गड़बड़ हो सकता है, ये तो ये अपराध करने से आदमी की दुर्गति होगी। तो मायावाद निराकारवादी को नाम जप करके भी वो उसकी उनकी अधगति अधोगति होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग गलत कंसेप्शन लेके चल रहे हैं, वो भगवान को निराकार मान रहे हैं और कृष्ण को सोचते हैं माया का स्वरूप है, कृष्ण को भगवान ही नहीं मान रहे। वो लिखी थी उन्होंने, हाँ हाँ fools will think of him as an ordinary man। हाँ, तो उस तरह का है तो फिर उसमें दिक्कत है, इसलिए कम से कम, लेकिन अगर कोई इनोसेंट है, इनोसेंट है, वो किसी वैष्णव गुरु ने बोला कि तुम नाम जप कर लो, तो करना चालू कर दिया श्रद्धा के साथ, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा, फिर वो उसका काफी सारे गलत गलत चीजें उसकी निकल जाएंगी, और उसको समझ में भी आने लगेगा कि भक्ति का ज्ञान समझ आने लगेगा उसको लेकर। तो इसलिए भक्ति जो हमें प्राप्त होती है किसी भक्त से प्राप्त होती है, भक्त भक्ति संजाते भक्त, तो किसी भक्त के हृदय में जो भक्ति है उसके माध्यम से अगर आपको प्राप्त होता है नाम जप, तो फिर उसका सही प्रकार से आपको प्रभाव दिखेगा इस प्रकार। तो इसलिए बताया गया कि संप्रदाय विहीन भक्ति, I can share that first. निष्फलम ऐसा,
Hmm. But Padma Purana is mentioned, it is said that Sampradaya Bhinaji Mantra Chavani. If one does not follow the four recognized disciple succession, mantra initiation is useless. So this is important. संप्रदाय में होना चाहिए. If one wants to advance in spiritual power, one must receive his mantras from one of those bona fide sampradaya. Otherwise, he will never succeed in life. The knowledge of the supreme received from the such a sampradaya or disciple can give one enlightenment. तो तीन चीजें, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. पहले संबंध ज्ञान भी होना चाहिए कि आप कर रहे हो नाम जब भगवान है. भगवान कौन है? हमारे आराध्य हैं. वो एक वो ऐसा कोई निराकार नहीं है. वो एक आध्यात्मिक ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह है. वो आध्यात्मिक स्वरूप है उनका. और हम भगवान के आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं. तो वो भाव रखना इम्पोर्टेंट है. फिर उस भाव से तो हम फिर अपराध नहीं करेंगे, वरना वो अपराध कर रहे हैं. तो निरपराध भाव से फिर हम कर पाएंगे नाम. हाँ, अगर कोई इनोसेंट है, उसको कुछ पता नहीं, इनोसेंट है, उसने नाम जब कर लिया हरे कृष्णा, तो उसका फायदा है. ओके. मतलब उसको अज्ञानी है, वो उसको कुछ. वो जो उसने स्टार्टिंग में लिखा था, मैं अज्ञानियों पर गीता पढ़ता हूँ. नहीं नहीं नहीं, वो अलग है. वो ज्ञान कैसा है? वो स्कॉलर नहीं है. स्कॉलर. उसको पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन उसको भगवान में श्रद्धा थी पूरी तरह. उसको भौतिक ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शास्त्र का ज्ञान है उसको, क्योंकि ही इज हैविंग फुल फेथ इन गुरु. तो उसको जिसको रिवील्ड नॉलेज, तो शास्त्रों का जो निचोड़ है उसको पता है. तो भगवान में बड़ी श्रद्धा है उसको, भगवान का स्वरूप पता है उसको. जैसे भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर के जो गुरु थे वो अज्ञानी थे, इलिटरेट थे. अज्ञानी नहीं, इलिटरेट थे. लेकिन वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो बड़े स्कॉलर थे, उनके भी गुरु थे. कैसे? क्योंकि जो भगवान का नाम जब करा, भगवान की पूरी श्रद्धा है, तो उसको शास्त्र के पूरे ज्ञान उसके हृदय में प्रकट थे. तो वो फिर अज्ञानी रह ही नहीं सकता वो. तो इसलिए इम्पोर्टेंट. तो इसलिए जब हमको, तो हम जो नाम जब करते हैं, कैसे करते हैं? वो हमारे को गुरु परंपरा से हम प्राप्त करते हैं नाम. तो फिर उसका फिर इफेक्ट आता है. भाई कोई इनोसेंट है, कोई भगवान का नाम जब कर लिया, तो उससे उसका फायदा है. लेकिन कोई गलत कंसेप्शन से कर रहा है रेगुलरली जब, तो उससे उसका फर्क नहीं पड़ेगा. इनोसेंटली अज्ञानी है, कोई से जब कर लिया, हरे कृष्णा बोल दिया, तो उससे वो नाम का भाव उसको आता है. लेकिन फिर भी उसको एक वैष्णव संप्रदाय से सीख करके, उसको समझ करके करेगा, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा उसको. इस प्रकार से. और नाम जब करने से उसको हो सकता है भगवान का, मतलब वैष्णव को संगति मिल जाए. आपको जाना है ना गाड़ी वाला. ये भी लिखा है कि अगर कोई दूध है, समझो दूध तो न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन अगर किसी गलत व्यक्ति ने से लिया आपने दूध में, उसने या उसने तो सब डाल दिया उसका मुंह, तो उसको जहर हो जाता है. तो उसको पियोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, मर भी जाओगे. वैसे ही अगर हम भागवत भी सुन रहे हैं, या नाम भी सुन रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर किसी अवैष्णव के मुंह से सुन रहे हैं, किससे? अवैष्णव, जो जिसको भगवान के में श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप में श्रद्धा नहीं है, तो वो फिर बोलेगा ही तो भगवान के बारे में. बोलेगा. क्योंकि उसका अलग कंसेप्शन है. वो क्या सोचता है कि मैं ये नाम जप करके भगवान बन जाऊंगा. उसका ऐसा है. और वो सोचता है कि मैं निराकार ब्रह्म में लीन होने वाला हूँ. इस तरह का उसका कंसेप्शन है. तो उसके मुंह से सुनेंगे ना अगर हम कीर्तन, नाम जप या फिर भागवत, तो उससे हमारे भक्ति में वर्धन नहीं होता. क्योंकि वो भला, हालांकि वो दूध है, लेकिन उसमें उसका जो है कंटामिनेशन दिया है. ठीक है. वैसा किया. देखो इसका श्लोक भी है.
उत्तम। The words or song of a person not fixed in a Vaishnava behavior, not strictly following the organization, not chanting Hare Krishna mantra, should not be accepted by pure devotees. देखो, one should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. When it talks about Krishna given by non-Vaishnava are also poisonous. One must be a bona fide devotee, and then he can preach and impress devotees upon his business. Understand? लेकिन ये भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, तो कोई अगर इनोसेंटली भी भगवान का नाम जप करता है तो उसको उसको लाभ होता है। तो बताया शास्त्रों में कि जोकिंगली भी कोई किया, संकेत सांकेत्यम पारिहास्यम कैसे भी करके किसी ने नाम जप किया, उससे उसको बेनिफिट है। लेकिन अगर कोई अपराध करता है, जैसे मायावादी वो अपराध करते हैं डायरेक्ट, भगवान को निराकार घोषित कर देते हैं, तो उससे अपराध भाव से कर रहे हैं भगवान का नाम जब, तो उससे उसको नहीं होगा क्योंकि वो अब्यूज कर रहे हैं भगवान। राइट। तो वो सही नहीं, इसलिए सही भावना भी होना चाहिए, सही कंसेप्शन भी होना चाहिए कि किसी बात। तो कैसा है, कोई व्यक्ति इनोसेंट है, ज्ञानी, उसको पता नहीं, लेकिन वो सुनने को तैयार है, वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि कंक्लूजन बना के नहीं बैठा है भगवान निराकारी है, हमें वो भगवान ही बनना है, ऐसे करके नहीं बैठा। वो उसको वो इंक्विजिटिव है, अज्ञानी है, तो पता नहीं है कुछ, इनोसेंट है। तो वो बोला कि तुम जब करो हरे कृष्ण, बोलता ठीक है हरे कृष्ण, तो उससे उसका नाम का उसको नामोभास होता है, उसको बोलते नामोभास, उससे उसको फायदा होगा क्योंकि उस नाम में शक्ति है। तो उसका फिर वो उसका उद्धार हो जाता है सारे पापों से, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसको ज़्यादा वो आपसे अपराध ऐसा गलत कंसेप्शन लेकर के सोच करके कॉन्शियसली ऐसा नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमें कल्टीवेट करना है, भक्ति को वर्धन करना है, तो किसी वैष्णव के अंतर्गत रह करके सही भावना से और सही ज्ञान प्राप्त करके फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो उससे हमारा अच्छे से वर्धन होगा। ठीक है, हमने कंप्लीट नहीं किया ना, लेकिन आपको ये ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले नेक्स्ट क्लास। बट यू वुड अंडरस्टैंड दिस। हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट ना, इस तरह से करो। फिर ये योगा लेटर भी दिखाएगा आपको कैसे पूछा था, योगा का कर्म योगा, ये लेटर है, कंडीशन लाइफ कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग भक्ति योगा। डायरेक्टली यू कैन कम टू योगा भक्ति योगा, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लेटर चढ़ना है, आप डायरेक्टली भक्ति योगा पर भी आ सकते हो। तो हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर ये गीता एट ए ग्लांस पर दिखाएगा, पार्ट 1 कर्म योगा, पूरे 6 चैप्टर्स का ओवरव्यू दे देगा। तो ऐसे करेंगे ना, फिर हम लोग घुसेंगे एक सेक्शन में, तो आपको उससे काफी रिलेवेंस होगा। ठीक है, it will become more easy for you to understand. Gita is not so easy for any layman to immediately comprehend also. It takes time. Right. So I am reading since almost now 18 years. Again, I am also understanding, gradually. So it takes little time, but this will give you very good getting, and I am there for you. If you have any questions, you can even ask. जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। कभी कभी अकेले रहते हैं तो अपन क्वेश्चन रिंगिंग रहते हैं, फिर क्लियर भी नहीं होते, फिर हम आगे भी जाते हैं तो फिर वो आगे का भी क्लियर नहीं होता। बट इफ यू हैव, यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। If I also get some more, if I need some more clarity, I will also check from my superiors. But that way I think you will get more understanding. You are going good, this is okay? Yeah. Okay. नेक्स्ट क्लास में वही कंटिन्यू करेंगे। फिर अपन सेक्शंस में जाएंगे, ओवरव्यू देख लेंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर देन वी कैन रीड, तो उससे फिर आपको कनेक्शन कैसे क्या हो रहा है क्लियर होगा, तो फिर अच्छा से अभी आपको पता चलेगा 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, तो इसमें कर्म होगा। लेकिन आप ये भी देखोगे कि प्रभुपाद ने परपोर्ट में लेकिन भक्ति योगा ही दे दिया। दैट इज अमेजिंग थिंग अबाउट प्रभुपाद, कि प्रभुपाद डिड नॉट वांट टू मिस भक्ति योगा द कंक्लूजन। राइट। इसलिए कोई तो लोग प्रभुपाद के गीतों को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे क्या आपने कर्म योग में भक्ति योगा डाल दिया है। वो कहते हैं कि या बिकॉज़ आई डोंट वांट मिस द कंक्लूजन। जैसे कि
अभी माता है, माता जी जानते हैं पिता माता का जो मेन उद्देश्य है कुछ भी बताने का। जैसे माता कह रही ठीक है बेटा तुम ना मूवी देख लो 1 घंटा, उसके बाद गेम खेलो लेकिन फिर पढ़ाई कर लो। लेकिन माता का क्या उद्देश्य है कि वो अभी नॉटी है तो अभी क्या हाँ ग्रेजुअली तुम रिड्यूस करके कर लो। ठीक है ठीक है। लेकिन अभी उसका कोई बड़ा भाई कह रहे तो क्यों, तो पढ़ाई कर। हाँ तो क्योंकि जानता है माँ का हृदय क्या है, वो ठीक है। चाहती है लेकिन हाँ तुमको हाँ हाँ हाँ, ठीक नहीं रेडी है तो चल ऐसे करके आ जा। ठीक है ठीक है। लेकिन जो जो बड़ा भाई है वो कहता है जानता है माँ को, और माँ क्यों बोल रही है ऐसा, क्योंकि वो तैयार नहीं होगा ऐसा। राइट कहता राइट। है, अरे तू पढ़ाई कर चुपचाप, इतना हाँ एग्जाम है क्यों कर रहा है, हाँ तो डायरेक्ट सही। पढ़ाई कर रहा है, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली बोलेगा जैसे हम्म। प्रॉपर करे, अरे तू डायरेक्टली भक्ति हो गई समझ करेक्ट ना। समझ। So that's why it is not wrong कि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने कुछ चेंज किया, बट Yeah. प्रभुपाद is actually knowing the heart of the Lord and he is putting bhakti yoga everywhere हम्म। like that. So that is very beautiful. That's why this commentary is so nice. Because this commentary, हाँ Prabhupada will tell, but he will put in bhakti yoga या perspective. क्योंकि मेन एम तो वही है हाँ करेंगे। इसलिए like that he puts that way. Yeah. ठीक है। ठीक है bro, फिर ये Yes. रोक दो पहले हाँ तो फिर you can हाँ इसको मैं रोक देता हूँ and you can note down till where we read which page. वी रेड टिल 14 ना, सॉरी 14 नहीं 12, 7 टू भक्तियों का पूरा हो गया था। पढ़ लिया था ना। 13 से शुरू करना। हाँ यहाँ तक है, ठीक है चलो ज्ञान योगा चलो। 11 से शुरू करना। ओके, आपने पहले पढ़ रखी है भगवद नहीं मैंने थोड़ी सी पढ़ रखी है बट मैंने ऐसे कोई वो नहीं ये पढ़ा है। ये वाली। थोड़ी थोड़ी मतलब स्टार्टिंग के 3